अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज महवाश अजाज। मेरी नेजल आवाज आप सुन रहे हैं स्पॉटिफाई के ऊपर, और मेरा बेहाल हुलिया देख रहे हैं आप यूट्यूब के ऊपर। सॉरी, आई एम नर्सिंग अ वेरी बैड कोल्ड एंड सदफ वाज काइंड इनफ टू से कि कोई नहीं महवाश, ठीक हो जाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन ईद आ रही थी एंड देन ऑब्वियसली वी कुडंट स्टे फार अवे फ्रॉम यू गाइस फॉर टू लॉन्ग. So thank you so much for all the comments that you guys are giving us on the interviews and on the podcasts and on the conversations we have about Pakistani dramas. So we're here with a few agendas today. Love Guru के गाने कुछ रिलीज हुए हैं। सदफ, आपने देख लिए गाने लव गुरु के जितने भी नो आए हैं? नॉट रियली। कैसे लगे? मुझे एक मैंने देखा बस। कौन सा वाला देखा आपने, वो दुबई वाला? हाँ, द हाँ, दुबई, the kind of glam one that was kind of like a bit 90s, that kind वेरी of thing. नाइनटीज, वेरी नाइनटीज। और अच्छा, जो दूसरा एक रोमांटिक ट्रैक है वो तो इट वाज क्वाइट लवली, माहिरा वाज लुकिंग रियली लवली। अभी हम्म। उन्होंने एक रिसेंटली पश्तो गाना रिलीज किया है, सदा आशना, विच आई लव द सॉन्ग। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया टू इनकॉर्पोरेट रीजनल लैंग्वेजेस। एंड यूजुअली हुमायूं तो ज्यादातर पंजाबी उसके ऊपर रखते हैं गाने, उनकी फिल्मों में पंजाबी ही गाने ज्यादा होते हैं, लेकिन आई लव द फैक्ट दैट the protagonist this time, like जो जावेद का भी कैरेक्टर है, आई बिलीव he's a पश्तून। एंड जो ये गाना है, ये एक बड़ा ही कोई मशहूर अपेरेंटली कोई पश्तो गाना है जो इन्होंने ये अपनी फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया। सो गुड ऑन दैट, आई लाइक दैट, आई रियली लव द सॉन्ग। आई विश दैट Mahira was she styled beautifully, but like the cinematography is not doing her any favors. I feel like that she could have that she could she's so beautiful, and I've recently met her. We हम्म। had this event. I think I remember telling you about it. I don't know, जिन लोगों ने जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमने अभी दुबई में उनके लिए एक इवेंट किया था, where the Pakistani diplomatic mission was had awarded both of them with for their thanking them for the contributions to the industry. And she was looking resplendent. इतनी खूबसूरत वो हैं सामने से, और मैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मिली थी earlier that She day. looked that way in Dallas. She looked Yes, amazing. you met her, Flawless. yeah. Yeah. फ्लॉलेस स्किन, ग्लोइंग, बिल्कुल इतने प्यारे उनके बाल, इतनी उनकी हंसी, वो अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट में वो कितनी हसीन लग रही हैं। Hmm. She is looking absolutely stunning, yet somehow in the song she looks tired. Her skin looks flawed in many places when she does not have flawed skin at all. She has literally flawless skin. So I don't know what's going on there, I but think it's a lot to do with the camera filters and yes, lighting, yes, yes. And we've all had this experience where we're looking absolutely fabulous, and because of the bad lighting, you're Yeah. like, who is that old woman in the corner? Yeah, what's going That on with can't her? possibly be me, हाँ right? हाँ हाँ हाँ, तो आई थिंक वहां उनके साथ थोड़ा हैंड हो गया है, लेकिन ये कि वैसे वो। लाइटिंग के साथ मसले जो है ना, सबसे बड़ी हाँ, बात है लाइटिंग एंड कलर ग्रेडिंग। दैट ग्रेडिंग। कैन ruin a person's look. यस यस, सो अदरवाइज मतलब लव गुरु का पूरा जो एस्थेटिक है वो बड़ा ही मॉडर्न सा के ड्रामा फील है उसके अंदर, टर्किश वाली वाइब्स भी हैं, रोमांसेस वाली वाइब्स भी हैं। I can tell you something hilarious, right? One हम्म। of my cousins, she is an older cousin and she is not into Pakistani dramas. ओके She's not into that. She's one of those people that grew up, in the 80s and 90s. Or, आपकी शादी हो जाती है and she lived in America all her life. So अच्छा, she doesn't know who Pakistani stars are. ओके And she was, and this is a, discussion for later, but she was seeing the clips and she's like, this person has never been to a Pakistani movie. She's going ओके, like, I'm gonna go to that one. And I said, लवली, what? Right? I'm दैट्स going like, अमेजिंग। and she goes, that one, just मैं वो आपकी माहिरा है. And and I'm going, okay, okay, I'll take you. Yeah, that's lovely, that's so good to hear। and yeah, They are hitting their audience. You see, मैंने और आपने तो देखने जाना है. हमने तो Who हाँ। they're aiming at with these kind of more 90s style is a certain audience that has shied away from them. हाँ, And she was very admiring of Myra's wardrobe, saying it looks modern, it looks this, looks I that. think it's about the way that she carries herself. I think Yeah. you can put the same clothes on someone else. It's just Myra's innate confidence. It's the way she is. She was so kind to my mother, who was in Hmm. the audience. And I want to say this because होता क्या है कि हमारे यहाँ जब स्टारडम लोगों को मिल जाती है तो लोगों के दिमाग फौरन खराब हो जाते हैं, और वो एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। मैं इसको कोई ये भी नहीं कह सकती कि नहीं, खराब तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कभी खराब नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत सबका खराब होता है, एंड इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द पैकेज, राइट? बट आई थिंक दैट माहिरा इज वन ऑफ दोज पीपल जो, उनके अंदर कदरें इतनी ज्यादा हैं मोहब्बत करने की, उनकी जो एक और ये नहीं कि वो भाई मेरी अम्मी क्या है, मैं मेरे ख्याल से जिंदगी में दूसरी दफा मिल रही है मेरी अम्मी उनसे, और लिटरली
2 मिनट के लिए एक दफा मिली थी, एकदम 1 मिनट के लिए भी मिली थी उनसे। लेकिन एक तमीज होती है बड़े छोटे की, कि कोई बड़ा बैठा है या कोई बड़ा बुला रहा है, वो मुझे जानती है, माहिरा को मैं 8-9 सालों से जानती हूँ, तो वो उनको मैंने बताया कि मेरी अम्मी आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन वो चल नहीं पाएंगी, तो वो खुद चल के अम्मी के पास आई, जो कि बहुत लंबा रास्ता नहीं था, बट शी लेफ्ट एवरीवन, शी पार्टेड द क्राउड एंड शी केम टू मीट माय मॉम. इट सेज अ लॉट अबाउट हर एज अ पर्सन हु Yes, शी she's इज. like that. या शी इज She, लाइक दैट. she taught me out in the crowd. Oh, yes, Sadaf, she pointed me out to Humayun when Yeah. she was in us, gave me a hug. She's a lovely person. Yes, she Soft, is. Yes, she she is. is. She is. And I think that that kind of shines in her. Like, even if I have issues with the lighting and all of that, I still feel like there is something innately sweet about her that Hmm. that pulls people, that gravitates to people towards her. And Humayun has that kindness too, and he's such a star, he's the way that he is, the way that he's like this classically old school handsome man. So I think that there is something about the two of them which I never really saw actually. I wasn't a huge fan of Bin Roy. I like Humayun and Mehwish more. I like Fawad and Mahira more. I even liked Fahad and Mahira more than maybe Mahira or Humayun. But I think there are moments there when you're watching like little bit of songs and you're like, Acha. So that's what this is. There's this point where you're like, oh, I want them to be together. I want to see them like dance in the Really hills. enjoyed Bin Roy, I'll have to say. But I think Bin Roy for me was like, it's like, आपने aim किया था फवाद और माहिर का. Fawad हाँ would, हाँ, he right? didn't. And then, and I was the one with the uncle comments, and I And was by really the way, mad. Humayun said this. I I was I didn't know mad. this. I didn't know What? this, but Humayun said this in the recent like जो हमने हाँ यूएई हाँ में किया हाँ. था अभी दुबई में उनके साथ जो इवेंट, तो उसमें उन्होंने कहा कि he was supposed to do Fawad was supposed to do Binroe and Humayun Hmm. was supposed to do Humsafar, and I didn't know this, and I was like, what? He's like, yeah, he was supposed to do Humsafar, which he Yeah, didn't. because Humsafar, actually, the story was about a much older man. It wasn't Hmm. about, Fawad brought the age of Usher down a bit, Yeah, yeah, of course, fresh and because modern, he was very right? young at the time. Yes, yes, Hmm. yes. So I really wish them all the best, and hope you guys will go and catch the film in the cinemas. There's still a few days to I go. I think think it was offered to Faisal Qureshi as yes, well. you said Oh, yes, you told us yeah, this once कि हाँ yeah. उनको भी offer हुआ था, but we will talk about Faisal Qureshi in Raja Rani and Behroopia this week, and Deemak. We also need to remind folks कि जहाँ जहाँ दीमक रिलीज हो रही है, दीमक वो वाली दीमक जो रिलीज हो रही है उसको तो बिल्कुल फ्यूमिगेट करा दें, लेकिन फिल्म दीमक जहाँ रिलीज हो रही है वो प्लीज आप जाके देखें. यूएई में तो अभी तक नहीं शो टाइम्स खुले हैं, बट मुझे नहीं पता यूएस में लगी हुई है दीमक या नहीं. बट पाकिस्तान के सिनेमाज के अंदर दीमक द फिल्म इज बीइंग रिलीज्ड ऑन ईद. सो गाइस चेक आउट बोथ फिल्म, सपोर्ट द सिनेमा. आई थिंक दैट एक टाइम था जब हम कहते थे कि अब सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अब लोग देखेंगे, ये जाके कल्चर बन गया था. लेकिन अब फिर एक वक्त आ गया, एंड props and more power to the people who are trying to bring entertainment, good entertainment to Pakistani screens and to the people. चलें जी, शुरू करते हैं हमारे ड्रामा रिव्यूज. Sadaf, I want to start with two unlikely hits that I'm watching, and I know you have to talk about Sher and Mann Mast Malang, and that's definitely on the agenda. But before we move on to that, because I think that's a larger discussion, because I'm not watching either of these dramas. So yeah, I gave up on Sher. I know everybody's watching Sher with correct. Look, we have to watch them as kind of like anthropologists. We are not watching them as drama. Something that we want to watch. Yeah, zoologists or It's anthropologists. it's an No, assignment it's a scientific project. adventure. हाँ, it's a Yes. scientific discovery. Okay, ठीक है. चले, तो मैं आपसे सवाल करूंगी एज अ साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट. हम पूछेंगे एक दूसरे से सवाल कि जी कैसा कैसा रहा, आपने क्या इसके अंदर डिस्कवर किया है. सो वो तो एक चीज हो गई, बट आई वांट टू स्टार्ट विद टू अनलाइकली ड्रामास जो कि लोग शायद नहीं देख रहे, उसके इतने रेटिंग्स और इतना इतना हुल हंगामा नहीं हो रहा. इट्स Mhm. हिजर एंड दस्तखत. So I want to start with the Hijr, and why I want to talk about Hijr is because all the past episodes I was struggling with why is Zamir doing what he's doing? Like he's going out of his way to help this chick who was his ex, who is Okay. literally living in this house, and then you see Subuhi taking the right choices. मतलब वो उस दूसरे डॉक्टर को, जो डॉक्टर हारून का कैरेक्टर है, उनको थोड़ा पुश कर देती है. वो अपने बच्चे के लिए भी वापस आती है, कॉम्प्रोमाइज करती है जबकि वो नहीं चाहती. अपने बहुत अपनी अपनी देवरानी कौन है, उनकी जेठानी जो भी है, उनकी बात भी समझ के थोड़ा उस पर अमल करती है. एंड शी इज वेरी assertive and she's obviously hurt and everything, but Zamir here is
now becoming the real villain because he is like, and you know, there's this huge monologue जो मैंने अभी इनकी episode recent जो आई इसमें there's this huge monologue by Hina Altaf where she says that you need to ask yourself why you're doing this. I thought Hmm. that was so brilliant. I thought more characters, male or female, need to ask the other characters this question, which we don't. कि भाई क्यों कर रहे हो ये? Good writing from Sanjabil, Brilliant. because very rarely do our characters allowed to ask reasonable questions. हाँ. They usually statements, yeah, या challenges. रोना या डायरेक्ट रिएक्शन. हाँ. Yeah. हाँ. And this is one of those few, and this is why I keep saying, what will it take to bring the old Zanjabil back? Right? Because this is such an important, and I love this show. Hijr मैंने रात को finish किया, अच्छा. and I'm looking at it, and that whole show is playing with your mind, because at one side, everybody else is saying, "Oh, Sabuhi, you're so spoiled. You're so wrong. Yeah, Got yeah. everything you And want." you feel that too when you're watching her. You're like, she's a No, bit. aiming that, but हाँ. then the woman in me is saying, "What the hell is going on here? कि अपनी एक्स मंगेतर को लेके और और वो यार. इतने प्यार से घर घर खेल रहे हैं दोनों, you know, हाँ. and हाँ. Subuhi, uh, she's his wife, and she literally, अच्छा Hinal Taf की acting. हम्म. The one etraz I have is हम्म. that a woman who is this educated, she's a cardiologist, is not going to be lips हम्म. trembling and because she हम्म. sees life and death, right? Okay. तो उसकी आंखों में आंसू है, and I will say no once in a while, but a practical woman would be very practical and say, how many weeks are you staying here? Yeah. मैं I have the money, हाँ. लाओ, मैं तुम्हें हाँ. हाँ, मैं that's a दे good point. देती हूँ। That's a good point कि आप Yeah, कह सकते हो कि अच्छा सुने, if you're really that bothered about finding a right. space, let me help you out and let me get you a space of your own. I'm sure you'll get a very nice. Right. Do you have any relative at all? Third, fourth, शी हैज नो seventh. रिलेटिव. ये I'll send you आसमान से money. उतरी है. Yeah. आसमान से उतरी है, सीधी टपकी है जमीर की गोद में. एंड And did you notice the way the director slipped in the doubt? Because everybody is saying, "Oh ho, Subhi, तुम कितनी बदतमीज हो, तुम्हारा कसूर है, तुम विलन हो, तुम में इंसानियत नहीं है, जो इंसानियत के लेक्चर्स वो दे रहा है." लेकिन did you see the scene in the kitchen? वो जो महरीन जो है ना, एकदम उसकी तरफ यूं देखती है, and you हाँ. get the feeling that Mehreen is just playing it cool. Look, people क्योंकि don't everybody change. else is working it out for her. I feel like Zanjabil is too smart to Hmm. immediately whitewash Mehreen like that because if you remember in the beginning, and I think this is also one of these great messages about Hijr, that trauma and big life changes can definitely change you in a lot of ways, but you don't change who you really truly are at the heart. लाइक जो हमने जमीर के अंदर भी देखा, जमीर को जब वो नहीं हुई ऑफर, वो पोजीशन जो वो चाह रहा था, तो उसने इमोशनल होके ये छोड़ दिया. लेकिन एट द एंड ऑफ इट ही इज एन ईगोइस्टिक मैन. He will do anything. He will sacrifice his marriage and everything because his ego requires someone to worship him. When he saw that, when his wife was like very grateful, and when his wife was like, "Oh my God, I'm so lucky," when he thought he could be the Messiah and the Savior, he was all there. But when he realized that his wife is like going way beyond than him, then he can't really match her up anymore. तो उसको फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढना शुरू हो गया जो उसकी वर्शिप करे फॉर हिज benevolence. Maybe, That's his maybe fatal that's flaw. true. Maybe that's true, but I mean, right now, if they nip it in the bud now, वो सब ठीक हो जाएगा. 21 लेकिन episodes हुई हैं अभी सदा. It's gonna get worse. I know, but I'm just saying the lesson, I think Zanjabil has given us some great lessons in Yes. this, because you can tell at every point that यहाँ से मुड़ जाओ, everything will हाँ. be okay. यहाँ से मुड़ हाँ. जाओ, everything will be हाँ. okay. So true, so true, Yeah. so true, so well put, सदफ. कि वो Yeah. एक एक जगह पे आपकी कैरेक्टर को चॉइस देती है. Mm. It's like it's an interactive sort of a show. Ki you will say that should I choose path A or path B? It's like the Russian roulette or the a video game of relationships. Super Mario Brothers the relationship का. इधर जाओगे इधर से गिरोगे, नहीं तो अगर यहाँ चले जाओगे तो ये फायदा होगा. अच्छा, वो जो आपने मेरीन वाली बात की ना, वो बड़ी फिट बात है. उसमें एक और पॉइंट भी आपने नोट किया कि जब वो शॉपिंग के लिए बच्चे को लेके जा रहे होते हैं, तो शी टर्न्स अराउंड एंड वो बच्चा कहता है कि ना हम मेरीन
आंटी को भी ले चलें साथ। एक तो बच्चे को मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा बच्चा होता है जो उसको एक रैंडम चलो आंटी वो स्टोरी चलाने के लिए चलाने बच्चों के लिए, वो बच्चा वो रैंडमली स्टोरी चलाता है, उसको टॉय भी वही को, चाहिए होता है जो महंगा टॉय होता by the way, let me, I'm sorry, I know I'm interrupting you, but children are like that. They like people that give them time and है। हाँ ये भी attention. है, ट्रू, दैट्स अ Mehreen गुड is पॉइंट। available. You have noticed शी इज देयर ऑल that द टाइम। सुबूही की क्रिया तो एक अलग बात है। जब सुबूही नाराज हुई, वो अपना बच्चा साथ लेके नहीं गई। सही। राइट। सही। शी इज हैविंग डिनर इन अ रेस्टोरेंट। जब वो अपने पेरेंट्स के घर गई है, सुबूही को कोई अपने बच्चों की फिक्र नहीं थी। ना। शी वाजंट हाँ। worried about her son. She was हाँ। just, it's Subuhi on the line here, right? And you know, it's the interesting thing is that I think Zanjabil is asking us. She's asking us, who are you really rooting for Mm. right now? Who do you want to, what would you want them to do? And if I'm showing you a character like this, are you judging her? And how are you judging her? Are you judging her for her choices? And how harshly are you judging a woman? Or how harshly would you judge a man if he did the same thing? So I think that she has really, really, like, this is, I think, one of the A most lot of brilliant things. depth. Oh Lot my of God, depth. so, so good. And that, like, that monologue that I keep talking about, like that when she says, कि तुम ask yourself why you're doing this. This is ridiculous. What you're doing is ridiculous. And Because what I he's want, pretending he doesn't fancy and her. He, Imran Abbas, like, kudos to him also. yeah. Like, हाँ, वो फैंसी के अलावा सदफ, वो जब उसको ईगो वाली बात करती है ना, तो वो 1 मिनट के लिए ना वो Mm, हिल जाता है। और फिर mm. वो जब उसको वो कहती है कि तुम मुझे चीट नहीं करना, देन हिज मेल ईगो इज बैक इन एक्शन, एंड जो मैं मेरीन की बात आपको कह रही थी ना, कि जब वो बच्चा उसको कहता है कि हम इनको भी ले चलें, तो वो बड़े मजे से सब हुई। एंड आई एक्चुअली लाइक दैट अबाउट हिना अल्ताफ, शी लाइक डेड पैन, शी इज लाइक नो बेटा, शी इज शी इज अ गेस्ट, लाइक यस क्वीन, शी इज अ गेस्ट. And she's just, it's like we're going out. She's not family, right? So she can't go out with us. And you see, like, her crying. Now, I get it, like, okay, I'm supposed to kind of feel sorry. Okay, she felt hurt. But I'm like, woman, be grateful somebody's letting you live in their house. You don't have to crash every party they're on, right? So, yeah, I think that, No, I think Mehreen is on a mission. oh, yes, She's just, possible. Yes. yeah. I don't feel an ounce of sympathy for Mehreen. People, Um, there's so many places where Mehreen could have stepped back and said, you know what, can I talk to the other bhabhi? uh, Is are not feeling comfortable. Do you mind if I stay a month here? उसके yeah. बाद नहीं जाऊंगी। You remember या Zubi? मदर के साथ, वो आ जाती, मदर तो 1 महीने के लिए आ जाती। Uh, All of right, Mehreen is going with the flow because I know what she wants, right? And look, I mean, like the people I've seen in my life that have done this kind of thing, uh, they are all Mehreens. They're kind of like yeah. and they go with the flow. Yeah, and then So you remember how Zubia was in the same situation in Yaki Ka Safar. She was in kind of an ex, not really an ex, but an right, ex. जो उनके अपनी खाला के घर में जाती है पेशावर में, and then she's like, Sawat, Peshawar, whatever, and then she's like, no, I'll take my leave, thank you. And that's what a dignified woman does. That's what a dignified character does. But zero dignity in Mehreen, zero, nil, hmm. anda, anda. Anyway, Hijr is great, guys. I don't know why more people aren't watching. It's great, I, I and just I just wanted to add one thing. I think that when we judge characters, right, and a lot of people will be judging, Mhm. what you have to do is flip it over. Yeah. If if Sabuhi brought home her third cousin and said he's going to stay here, Yeah, exactly. I wonder Exactly. what the mood would Who's be. my ex? Who's also my ex, by the way. Who's also my ex Mangeter, Yeah, yeah. Mangeter. और वो उसने बस यहाँ रहना चाहता है दो और दिनों के उसने लिए। लड़के मुझसे शादी की थी. Don't forget that Mehreen pursued Zamir a lot. A lot, a lot, a lot, a lot, a lot. And I think that's also, oh my God, I can keep going on about Hijr, but I think it's also about, कुछ लोग ना ऐसे कमीने होते हैं जिंदगी में, कि वो जब आपका जब डाउनफॉल होता है, और उन्होंने आपके डाउनफॉल में आपको छोड़ा होता है ना, जैसे जमीर को महरीन ने तब छोड़ा था जब जमीर सीएसएस ऑफिसर रिजेक्ट कर चुका था, वो जो अफसरी थी। Right. तो अब जब महरीन इस हाल में है, तो एक कमीनी एक सेटिस्फैक्शन हो रही है जमीर को शायद, कि लुक, आई एम हर सेवियर नाउ, लुक हु इज द सेवियर नाउ गर्ल, यू नो ये थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड थोड़ा है नहीं, उसका। हाँ, You बहुत see, ज्यादा, right? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, एंड आई होप दे विल एड्रेस इट बेटर.
I don't feel that the way you're describing him. I think he's one of those people that is blinding himself to his own emotions. मैं तो ये charity work कर रहा हूँ. You remember I did this post about a Faisal Qureshi drama in which I said charity workers of Pakistan. Right? And it was this Beva, and he was helping her. Eventually, he fell in love with her. Wasn't And it this, Baba Jani? Baba Jani was also like this, no? no, not Baba Jani was a good drama. No, Ah, it was it a good was drama. something. Yeah. Ah, It was another drama. She's his best friend's wife, and he falls in love with her, yeah, even though he's remember already watching that. married. No, this Ah, चक्कर ये है कि why we have rules of parda, why we have rules, because I think, we get caught up in these things about hijab and kapre, and the parda is of the mind, yeah, right? And that is also part of parda, and I think a lot of people forget that. Okay, once you have this circle in which there's you and your loved ones, yeah, and then once you keep opening that circle, and allow other people to enter, then they're going to stay after a while. So 100%. when yeah, and I think that all of these dramas show that it's not, we are only human. Yeah, yeah, yeah. And And as humans, when we make those mistakes, yeah, how do we rise yeah. from them? That's something to learn. And I think that takes me to our next drama. Sadaf, are you watching Dastakhat? I've seen a few clips because अब मुझे ना थोड़ा सा, I mean, I liked Amar Ali, उनका नाम है. जी I जी. really liked him in Tanman Nilo Neel, so I Yeah, thought I'd he's watch it sweet. for a bit. Yeah. But in this one, he's so annoying, and so I He's a didn't watch. terrible person in this drama. Absolutely terrible. Oh God. No, So it's not the character. The acting is off, acting right? is both acting is off and the character is just not like you can't get behind this guy in any way, right? So I wanted to just quickly discuss this before we move on to Parvarish and Raja Rani, Behroopia, and our favorite Sher and Mann Mast Malang is that दस्तखत के अंदर जो अमर खान का कैरेक्टर है और जिस Hmm. तरह वो पीस मेकर बनी हुई है और उसने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला है एंड एडिसन इदरीस ने इसको लिखा है तो उन्होंने एक जुमला इसको लिखा है कि आप हमेशा कहते थे ना कि जो ऑर्फन्स होते हैं उनके हुकूक के बारे में बहुत माइंडफुल रहो तो आप कैसे ये कर सकते हैं कि आपका बच्चा जिंदा है आप जिंदा हैं लेकिन आप उसको ऑर्फन्स की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज यू नो वट एवर ही हैज डन आई थॉट दैट वाज रियली well argued. I don't agree with it, but it was well argued and it showed the strength of Amar's character. जो उसके कैरेक्टर की एक स्ट्रेंथ दिखाई है और the reason why I think we were so put off in the beginning because it was the whole दुखियारी trope that was happening and constant crying and और हाय जुल्म हो गया और मुसीबत आ गई गलत जगह शादी हो गई अब जो वो जिस पिच पे आया है ना ड्रामा मुझे उसकी जो अच्छी चीज लगी है जिस तरह वो उसको ट्रीट कर रहे हैं दे आर Hmm. टॉकिंग अबाउट सो मेनी इश्यूज इन द सेंस दैट दे टॉकिंग अबाउट the taboos and the stigmas in society, what we have to deal with when personal lives become a public circus. Then they're talking about grudges and that family, जो मेहरबानों की जो फैमिली है क्या कैरेक्टर का नाम नहीं मुझे याद उनके Yeah, that एमी insane man, right? She's हाँ taken his sherwani and made shoes shoes out of out it. of it It's just psychotic behavior. And completely psychotic मुझे ये अफान वहीद का character is like कोई बात नहीं, Salman. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Yeah, What? and you know what I would have liked? I would have liked is where and how does a person like Salman, who comes from a relatively stable family, falls in love with a psycho queen like this? Like, why would he fall in love with someone like that? So I feel like that should have been a little bit explained so that I could the best way to get an audience hooked to a drama is and the characters is when you are giving their all of their motivations and backgrounds a little bit, if Hmm. not too much. That's why dramas like Yakin Ka Safar work because all of these characters are coming from their different places of trauma or Eh Wafa or any other ensemble drama or multiple plot lines where they kind of converge and the conflict blows up then. But then when they are coming from each angle and each place, show why that has happened एंड डोंट जस्ट से कि मुझे इससे मोहब्बत है मैं शादी करने जा रहा हूँ भाग के शादी कर रहा हूँ ये मेरे शेरवानी की जूते बना ले आई डोंट केयर मैं शादी करने जा रहा हूँ तो दैट इज व्हाट वाज मिसिंग बट आई रियली लाइक दैट अमर इज डूइंग सो ब्यूटिफुली अमर इज सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस Hmm. एंड शी kept it so in control even though they're like you constantly see her on the verge of crying but like वो सीन भी बड़ा अच्छा डाइनिंग टेबल पे सारे लोग बैठे होते हैं और सलमान comes and he wants to sit in
Hamza's place, I think, and जो उनके अमार के character का जो नाम है, and then and then she very stoically, that girl says, Amar's character says, खाने से उठना इस तरह अच्छी बात नहीं होती, तो तुम बैठे रहो अपनी जगह पे. That was very cold, and that was very well done. So I think I have to applaud Edison Idris for a very sensitive kind of portrayal of a female character. I think that's very difficult for men to understand these nuances, and let a female character retain her dignity. खवातीन फिर भी थोड़ा कर देती हैं, लेकिन मेल राइटर्स नहीं कर पाते. तो एडिसन ने पहले भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया था इन सराब, एंड ही हैज आल्सो बीन वेरी गुड हियर. तो ये था सदफ मेरा टेक ऑन दस्तखत. फिर है जी परवरिश. सदफ, यू वांना tell me Hmm. how you felt about Parvarish? Lot of conversation is going around Parvarish. I think Parvarish, I'm so grateful to them for writing this. We were unable to speak to Kiran Siddiqui. Some stuff came up. Lekin, Not I from our still, side, though. Not from our side. not from our side, it Yeah. never is. Yeah. But हम लोग तो, anyway, but hopefully maybe sometime in the future. But I'll have to say it's remarkably well written, and I love the way the plot has been constructed. Hmm. Just say everything feeds into this. And in the beginning, I was very worried that Wali ka character will take over everything, which he Hmm. has a bit. I'm hoping that the other characters get a bit more time, but I love. Don't you think Maya has Yeah, kind of Maya taken? too. No, Maya and Wali seem to be in number one, whereas Uh, I'm actually interested in the younger daughter uh, and Usmir. I would love to uh. see their interaction. I think we're going to get a bit of that now, Yeah, right? I'm waiting for that too. Yeah. And also the way that जो अंकल जी हैं नुमान इजाज उनके अब्बू अच्छा, अंकल is जी. हाँ. immediately रिश्ता उनके जहन में आ गया है. हालांकि they don't like each other, वली and अमाल, Hmm. but it hasn't clicked. वो सिर्फ उसको देखा ना कि they're bossing each other around. Anyway, I really really felt for Maya. I I Hi. I was a little bit, because I've seen so much of this. I keep repeating it, and it was very sad. And that monster of a father she has, the way he came to attack her, he didn't defend her in any way. Or by the way, ये जो the Waleed, The the fiance. fiance, जी, he जी. knows who the father is, and he is using them to abuse Maya. I Yeah. mean, come on, right? Yeah, We yeah, know yeah. exactly what's going on. 100% agreed But with what you. I'm going to say, and I say this to everybody who's in this situation, is वो टीपू सुल्तान, I think, said कि एक दिन शेर का हजार, you can, it's better to live like a lion one day, One day. take and take whatever's coming, than it is to live like a jackal or a hyena in weasel or hell. whatever. हाँ, जो भी Yeah, उनकी whatever थी. it is, they हाँ. said. हम्म. So, and I think this is it, because अगर थोड़ी सी हिम्मत उसमें हो, and her mother is not backing her, there are ways of telling this guy and his family कि no thank you, हम्म. मैंने नहीं आपके साथ रहना. हाँ. So अच्छा, there are, मुझे. जी, जी, बोलिए. नहीं नहीं, that's it, go ahead. I just feel like there's good news and bad news for me in Parvarish. The good news is that it's still such a good watch overall, with all of whatever flaws I'm about to count. It's still overall such a very well packaged product. It's a well marketed product. It's a well oiled product in so many ways कि उन्होंने जिस तरह इसका पिच रखा हुआ है कि ये एक के बाद एक चीज होती है, तो performed really well. Obviously, we've got great casting with Humayun, कह रही हूँ, नोमान एंड हुमायूं ही चढ़ा हुआ है भाई. लव गुरु जब एक दफा रिलीज होगी तो हमारे सरों से हुमायूं का भूत उतरेगा. नुमान इजाज साहब और जो सवेरा नदीम की कास्टिंग इतनी ब्रिलियंट है. और आई Hmm. लव दैट सीन वेयर ही इज मेकिंग दिस फेस, इट्स गॉन वायरल, where he's making that face when she says that it's from the roti maker. This roti is from the roti maker. To the Uh, dadi. Oh my God, that face he makes is like literal comedy gold. तो मुझे लगता है कि तो कास्टिंग में दे कास्टिंग कू है ये बेसिकली, जो hmm. उन्होंने पूरा जो ये किया, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ. सो हैट्स ऑफ टू देम फॉर दैट. व्हाट आई फील इज लाइक, जो चीप थ्रिल है या जो चीप मिजरी है ना, जो हमें मिल जाती है इस तरह के प्लॉट लाइंस दिखा के कि एक कमीना बाप है और ये, वो आई थिंक दैट हैज हैपेंड एंड आई एम नॉट रियली बाइंग इट. आई डोंट लाइक इट. I like the fact that they had shown that there was a girl who was struggling with her father, who was very oppressive in many ways, and he was somebody
वो जो कहता था कि ये either this way or that way, my way or the highway, and the mother is not supportive. And we kept saying, Sadaf, remember the last time we talked about it, we said it that sometimes households like these are like this because the mother is complicit and she does not do the right thing. So a lot of people, when they praised Maya's mother's line कि your education will be your takat, I said no, no, this is not a good thing, and this is why it's not a good thing. And it's again impressing on my point that जब आपके सेटअप में ऐसा बाप हो, माए बेटियों को सही रास्ता दिखाती हैं, और सही रास्ता ये नहीं होता कि बाय हुक और बाय क्रुक तुम ये मैनिपुलेट करके अपनी चीज निकाल लो, फिर सर्वाइवल देखी जाएगी। सर्वाइवल के राइट। और भी तरीके होते हैं, और समटाइम्स यू हैव टू गिव अप अ लॉट। आपको हो सकता है अपनी मेडिकल की डिग्री वो करनी पड़ जाए। अगर उसकी बाप उसके सामने ये ऑप्शन रख रहा था कि बेटा इससे शादी करो वरना मेडिकल तो नहीं हो सकता, उसको कहना चाहिए था अब्बा मैं वो बीए कर वैसे भी लूंगी। नहीं हो रहा, वो वैसे वैसे तो भी कौन नहीं सा हो हो रहा रहा। है, ठीक है, और आप मुझे बीए करवा दें, मैं प्राइवेट बैठ के इंटर कर लेती हूँ और मैं प्राइवेट कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लूंगी, आई एम ब्रिलियंट, आई कैन डू एनीथिंग, बट आई एम नॉट मैरिंग दिस मैन। डॉक्टर बनना है तो ठीक है, लेकिन इस प्राइस पे तो डॉक्टर नहीं बनूंगी मैं। ठीक है ना, लेकिन मैं माया को ब्लेम नहीं कर सकती ये बात कहने के लिए। ये जो मोरालिटी या जो फोरसाइट या क्लैरिटी होती है, ये माँ बाप देते हैं बेटियों को। माए ये नहीं कहती बेटियों से बेटा क्या हो गया कर लो ना शादी, डिग्री भी तो मिल रही कहती है हैं, साथ में। कहती हैं, क्या? कहती हैं माए। हाँ हाँ कहती हैं, तो लेकिन दैट्स हम द उनको अच्छी माए प्रॉब्लम, नहीं कहते द हम उनको, प्रॉब्लम। लेकिन लेकिन सदा हम उनको अच्छी माए नहीं कहते, हम उनको ये नहीं कहते राइट। कि ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है बेटी को। See, this is where maybe हम लोग diaspora, but this happens in the diaspora as well, हाँ right? Nobody wants to hate their parents. So you think these people love me? कुछ ना कुछ वो सही कह रहे होंगे. हाँ It's very hard to, I know ये movies और dramas में होता है, लड़के कहते हैं मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, मुझे ये औरत पसंद आ गई है. वो हम्म। movies और dramas के लिए in real life, whether you're living in the diaspora, the West or whatever. Why do we hear stories of forced marriages in the हाँ West if it's that easy to do? और फिर हाँ पाकिस्तान में तो और मुश्किल है. And then माशरा जो है society is telling you कि you are an evil, evil person. हाँ तुमने डिफाई कर लिया अपने पेरेंट्स को, जो हाँ वो मेरे माँ बाप हैं, वो ये हैं, वो ये हाँ वो. हाँ So, and what it is these two parents gaslight her a lot. हाँ They're not 24 hours जालिम भी नहीं है वो. हाँ Yeah, this is a lot of gaslighting, narcissistic हाँ, लॉट manipulation ऑफ from इमोशनल both. अब्यूज। अरे इमोशन। बेटा तुम समझती हो हम तुम्हारे दुश्मन है, एंड द हाँ इज वेल ऑन इट. वरना मेरी माँ होती तो वो कहती गोली मार इस जोड़े को, तुम उसको जाके कह दो. राइट, आई मीन बट दैट वाज माय मदर, राइट. या Other mothers don't do this. या So, and they're showing us other mothers that are not good, that are not willing to support the child's dreams बिल्कुल। and एंड वही है ना कि मेरी जिंदगी गुजर गई है, इसकी भी गुजर जाएगी. और हम्म एंड यू थिंक अबाउट इट व्हेन यू वांट टू रैशनलाइज समथिंग टू योरसेल्फ, वो यही कह रही होगी ना कौन सी वो बुराई है वलीद में, मेरी भी जिंदगी गुजर गई है, इसकी भी गुजर गई. इट्स ब्रिलियंट राइटिंग. अच्छा, और देखिए एंड ना ये भी चीज उन्होंने दिखाई, सॉरी आप जी कंप्लीट कीजिए फिर मैं देन बताती हूँ आपको। नहीं नहीं आप कहिए कहिए कहिए, आप Okay, कंप्लीट and कीजिए। the last point on this, I have to appreciate Kiran Siddiqui and the whole Big Bang team कि उन्होंने ऑनर कल्चर को इस्तेमाल नहीं किया हम्म कि तुम्हारी शादी यहीं होगी वरना हम बदनाम हो जाएंगे. दे स्ट्रक्चर्ड द मोटिवेशंस एंड हम्म ऑनर्ड द गर्ल कि वो एक हम्म बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस, इट्स योर लव एंड योर प्राइड इन योर पेरेंट्स एंड फॉर योर ऑल. फैमिली, राइट, डूइंग द राइट दैट थिंग। ऑनर यू. या वो चीज बड़ी मुश्किल है टू फाइट. या नॉट वो जो रिबेलियन होता है मैं जा रही हूँ हाँ वो या मैं. करना आसान है, वो करना आसान है। अच्छा या आपको इससे थोड़ी एक मिनट के लिए वो वाइब नहीं आई दुआ जहरा वाली? मुझे दुआ जहरा याद आई एक मिनट के लिए, अच्छा. कि जिन जिन घरों में माँ बाप इस तरह की हम्म. सख्ती करते हैं बच्चियों को, कहते हैं ना कि एक बंद गली में छोड़ आते हैं। राइट. खबरदार जो तुमने किसी लड़के से बात की, खबरदार जो तुमने यहाँ से बात, तुम वहां क्या कर रही थी, बंद करो ये नंगा नाच, यू नो दैट। जो इस तरह के बाप होते हैं, इस तरह की माएं जो होती हैं, जब वो लड़कियों को इतना बंद कर देती हैं, इतना सफोकेट कर देती हैं, तो फिर एंड में लड़कियां कहती हैं, अब जैसे ये तो चलो थोड़ी सेंसिबल अच्छी लड़की दिखाई है, बट हम कहते हैं दुआ जहरा भी शायद कुछ ऐसे हालात में हो, या कहीं इस तरह की जो बच्चियां जो इस तरह के कदम उठाती हैं कि ओके आई आई विल जस्ट क्वाइटली रन अवे। wasn't right, हम उस लड़की का नाम हमें नहीं लेना चाहिए, बट just generally, I mean, I don't think, I think that she was trafficked. I don't think that she अच्छा ओ, went. अच्छा Yeah, ओके।
वो ओके। बाद में पता चला था कि वो बच्ची ट्रैफिक थी। अच्छा। सिर्फ वो उन लोगों ने ना उसको जैसे, वन ऑफ द थिंग्स ऑफ ट्रैफिकिंग इज, हम्म। पहले वो यही कहते हैं कि लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है, हाँ, यू नो, पॉसिबल। अच्छा, आई डिडंट नो एंड दिस, एवरीबडी आई इज डिडंट, आई वाज़न्ट अवेयर। एंड एवरीबडी वाज आस्किंग, भाई ये इतना छोटा लड़का, बहुत वेयर छोटा डिड था, ही वो खुद गेट द कितनी मनी? छोटी थी यार। Right. खुद की बच्ची Where सी did थी। he get the money? हम्म। How is he holding her in a house? या इसके या रिश्तेदार कौन है? What's going हाँ on here? हाँ हाँ हाँ, ट्रू So it ट्रू was ट्रू a ट्रू। trafficking operation. It wasn't Okay, that. so if we don't not look at then that case, but then the way that that case was presented initially, या जो हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं कि लड़कियां, और हमने सुनी है इस तरह की कहानियां कि लड़कियां भाग जाती हैं घर से Hmm. माँ बाप से लड़ झगड़ के, बिकॉज माँ बाप उनकी सुन ही नहीं रहे होते। तो I think that there's something to be said about that kind of a dynamic. Is there anything else, Sadaf, that you'd like to add about Parvarish? Not really. I think it's such a good drama and we're enjoying it, and it's got generations. That's another thing, right, about this drama. Okay, because it's got the older generation with their own kind of like track and the हाँ, younger generation with their own and track. the older generation also. Right. So it serves a dual purpose. It's allowing, old fogies like myself to understand ये बच्चे क्या कह रहे हैं, and it's हाँ, allowing children who yeah, are that's a good watching point. it कि parents का क्या, not all parents are evil, और ये Yeah, क्यों ऐसे हैं, right? And the हाँ different dynamics like हाँ। वो जो है ना उसका पन्ना, I हम्म। finally got her या name right. पन्ना, इवन आई पेड अटेंशन, लाइक क्या नाम है इसका यार, याद रखूंगी अब। ये पन्ना और वो दूसरी का जो क्लैश है, हाँ आई थिंक उनका नाम मानूर। हाँ। एंड फाइनली, आई मीन दिस इज अनहर्ड ऑफ कि सास आके माजरत कर रही है, एंड आई थॉट वुडंट दैट बी नाइस, वुडंट दैट बी Wouldn't we all be living in नाइस? raindrops on roses and whiskers on kittens? या Anyway, moving on to a great watch. Parvarish is a great watch, even though I have reservations with it. I'm very hypercritical in general. Um, then we're talking about sort of Raja Rani, which is हाँ। अमीन इकबाल साहब। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये आप जीत गए, आ, हम हम हार हार गए। गए। मैं इस रिडिकुलसनेस के आगे हार मानती हूँ। मैं बहुत बहुत आराम से कह रही हूँ, इट इज बिकम माई गो टू वॉच। जब मुझे होता है ना कि अच्छा मैं जरा क्या देखूं अब कि मैं सुकून में आ जाऊं, तो मैं ये देखती हूँ ना। सो गुड, सो बैड इट्स गुड। Why is that? Why is that? I think that there are a lot of things that appeal to our wishful thinking as audiences. We want certain things when life is going haywire. We want that sudden millionaire to come and like save us and give us that. तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए मिलेंगे to solve everything. And but then I'm kind of being facetious about it, but I feel like generally there are nuances to the characters which I wish that they had started off with. Like for example, हुमा नवाब का जो कैरेक्टर है, तो वो अली तारिक का कैरेक्टर उनको बोलता है कि मुझे, अच्छा तुम इतनी जल्दी तुम पैसों के लिए हो गई और तुम पैसे पे वो हो गई। तो उसने कहा औरत तकलीफ जो है वो मोहब्बत में गुजारती है। जब उसको तकलीफ उठानी होती है तो वो सिर्फ इसलिए उठाती है क्योंकि उसको मोहब्बत होती है, वरना कोई और चीज औरत को Love that dialogue. ओ माई I गॉड। thought their relationship is so lovely. And I'm sorry, I'm going to let you finish, then I'll add mine. Go. हाँ, तो बस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो ड्रामा। ऑल्दो आई फील लाइक हिना अफरीदी को प्लीज थोड़े से 4-5 वर्कशॉप्स और करा दें। वो कुछ जगह पे तो इतना बुरा उनका डायलॉग डिलीवरी, अल्लाह। अच्छा, कुछ जगह पे बहुत अच्छी है, कुछ जगह पे Mm. शी इज फैबुलस एंड यू आर लाइक वो हाउ डिड शी मैनेज दैट, for a person who was doing so badly in that scene. But there's certain places where she's brilliant, and there's certain places where she's absolutely awful, absolutely So god mixed awful. bag. Yeah. Mm. Faisal Qureshi is a delight. I love Mm. that I'm now able to not see his wrinkles or his makeup or his, the Mm. OTT stuff And of it. they've been clever about that. He's not pretending to be a 25-year-old. He is shown to be in his A grown 40s. man. Yes, Yeah, a yes. grown man who's regressed in childhood. Now, as to whether that's medically or psychologically It's not. possible, It's you not. know, It's not. I'm sorry. No, no, it's not. But But okay. my husband, the doctor, is saying, "नहीं नहीं, कोई बात नहीं," because He's he's so enjoying it. enjoyed. Yeah. Yeah. Say, so same. Me, I have forgiven the psychological ludicrousness of the show, Right. and I have dived straight into the insanity of it, and I'm like swimming in it. I'm like, tell वो me तो what next? Your take. Castle Crashing has made it so believable. So Acha, believable. I really, really enjoyed. This is supposed to be fluffy,
पल्प फिक्शन, लेकिन पता नहीं राइटर कौन है. आई वॉन्ट टू गिव देम क्रेडिट because, and this is what is missing in Meri Tanhai, right? Because I love Meri Tanhai as a Yeah. story, Yeah. but I'm only watching for the Kubra and the Aslan bits. I am Uh, getting really fed up with the rest of it because no care, no yeah. uh, Empathy. detailing, Yeah. detailing or empathy or is given to They're just like fundamental. fillers, Huh. fillers put in the frames to kind of like justify the scenes, टू basically. डायमेंशनल. Yeah, एंड yeah. येट राजा रानी जो एक फ्लफ पीस है मेरे जहन में, आई कॉल्ड इट पिट शो. मैंने काफी उसकी जैसे बड़े मीठे अंदाज से बेइज्जती की है. तो वो उन्होंने माँ बाप की रिलेशनशिप इतनी प्यारी दिखाई है बहुत अच्छी. कि आई लव द वे द मदर सेड टू द फादर कि मैंने एक बार छोटी सी बात कह दी और मेरी जो इतने सालों 27 सालों की मोहब्बत और मेहनत हाँ. जिल्च हो गई इन योर नजरें. सडनली मैं बुरी औरत हूँ, सडनली मैं ये हूँ. एंड शी टेल्स हर चाइल्ड कि जाओ अंदर जाओ, मत सुनना. एंड हाँ. because she's caring enough, she doesn't want her children. So in a way you kind of see कि these, you can be poor as dirt but you can have good relationship. Dignity. You can have Yeah, dignity also. Yeah. dignity. And the way that the girl is being brought up कि नहीं हमने नहीं पैसे लेने, हमने नहीं. हाँ. नोटिस बार बार रीइंफोर्स होता है कि दिस फैमिली का डायनामिक ही है, इज्जत मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल. Values, morals. हाँ. And it's not just that, they have uh, really good communication. Yeah. वो she doesn't let that thing fester, उसको पकड़ के Apart कहती. from selling the kidney quietly, yes, pretty stellar. That was funny. That was ridiculous, but chalo, हाँ, मान लिया. Just to show Okay, के. yeah, come on, we don't see this. Even in Parvarish we haven't seen this, कि Yeah. पेरेंट्स एक दूसरे के साथ इतनी रेजोल्यूशन करें. Yeah. So Yeah. I mean, I'm very impressed with both actors Yeah. and the writer as well. That was brilliant. Yeah. And this is why suddenly Rani appeals to me a lot more. क्योंकि मुझे पता है कि in the end वो हीरोइन उसने बनना है. But you हाँ. think, how will this girl from this background get along with this sophisticated man when he's normal, and Yeah. realize that she actually does come from a good background. Yeah. Also, that scene where Ariz's character asks her to hit herself was really terrible. Hmm. And I think that, and I asked myself, I said, okay, is this scene appropriate? In the, not that, oh, क्या हमें ये दिखाना चाहिए क्या नहीं. I think that all kinds of story are valid. मगर मैंने ये सोचा कि ये justify हो रहा है क्या, ये चीज दिखाने का क्या पॉइंट है, मकसद क्या है ये सीन का यहाँ पे होने का. तो मुझे एक बात ये रियलाइज हुई कि कभी कभी हम अपनी ऑडियंसेस को या हम अपने व्यूअर्स को उस डेप्थ में लेके जाना चाहते हैं मिजरी की, जहां से हीरो राइज करता है या जहां से वो डिसाइड करता है, और फिर वो डिसाइड करता है उसका कैरेक्टर कि अब यहाँ से राइज करके इसने क्या किया. जब वो लड़की आती है और वो उसको कहती है कि आई लव दैट एक्चुअली, कि जब वो आके उसको कहती है राजा को कि हम ना ये नहीं करेंगे, हम ये कहती है हम नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे. तो वो कहता है अच्छा हम Hmm. क्या करें, कहते हैं हम That बदला was a लेंगे. shock for me. I I thought was कि like, जाके शिकायत लगाएगी. हाँ. हाँ. और मैं समझ रही थी कि वो कहेगी हाँ जाओ तुम अपने बाबा को बताओगे उसने मेरे साथ ये किया, एंड शी लाइक अब हम बदला लेंगे. आई वाज लाइक यू गो गर्ल, आई एम विद यू 100%. So that was like there's so many moments where maybe a sort of our expectation was really low, and then you're like, hey, ये भी इंटेलिजेंट आ रहा है, ये तो ये भी इंटेलिजेंट आ रहा है. अगर शुरू में उन्होंने Yeah, काफी. that too, but I think you have hit the nail on the head. We had zero expectations, Yeah. but we also we are underestimating the charm of the leads, Yeah, yeah, right? yeah, yeah, yeah. So, They have chemistry also. Good केमिस्ट्री भी chemistry. है और उनकी चार्म है. हाँ. And I think that this is what you call star power, Yeah. right? Yeah. Maybe Hina Altaf, maybe उनका नाम क्या है, हिना समथिंग, Afridi. हिना Afridi. She technically, I think she has some bits and pieces to learn, and she's Yeah. honing her craft. Yeah, yeah, yeah. If she keeps herself serious, I think she'll be good because Yeah. I agree with you on certain areas. But she And she's has so beautiful. She is Haseen. माशाल्लाह Haseen, प्यारी है. माशाल्लाह. बहुत और प्यारी. लेकिन नॉट शी इज नॉट लाइक शी इज केप्ट टू हर रोल, हाँ. ओवरवेलमिंग एकदम. हाँ, लैशेज और वो स्ट्रीक्ड बाल और वो बड़े बड़े झुमके और कर्ल्ड बाल, वो अनमोल बलोच वाला जो उनका ग्लैमर वाला सीन होता है ना, अनमोल बलोच का जो ओवर पावरिंग किस्म का ग्लैमर.
Yeah, I agree with So you. I know that she's a work of art in process, Yeah, but they have a lot of well charm said. together. They have Uh, a lot of charm. I mean, Faisal Qureshi ke scenes, I am just like, can I just fast forward to these because they're hilarious, right? And you're just waiting for him to say, "Oh," like, तुम आ गई हो, तुम आ गई uh, हो, मेरे साथ खेलोगी. Oh my God, and funny, and funny, they funny. acknowledge it कि ये the extremely handsome good looking young man, and Mm. he is acting like a baby, and they do have their reservations कि ये क्या Yeah. हो Yeah, and also तो I want to point out something here. Okay, why am I okay with this? And I wasn't okay with Ranja Kadi because essentially they're both, man child and that whole neurodiversity isn't being made fun of. So in my head, and what I've seen is this is not really neurodiversity. It's no some it's not. it's some absurd justification which does not make sense. But Hmm. because of its ridiculousness and because the story has propelled forward the way it has, you kind of have suspended belief. Suspending belief is core. It's that basic point. अगर मैंने Avengers की दुनिया में मैं step in कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि एक Thor आएगा. There's a Yeah, guy who you have can to turn back time. suspend disbelief, सस्पेंड right? डिसबिलीफ, यस सॉरी. Yeah. तो Hmm. अब ये सस्पेंडिंग डिसबिलीफ वाली जो चीज है वो राजा रानी में हो गई है. ठीक है, लेकिन राजा रानी में, रांझा रांझा कर दी में इट वाज अबाउट अ वेरी रियल इशू. यू वर टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी हु ग्रू अप टू बी अ सर्टेन वे एंड देन not only you turn that character into a caricature, all the things that were happening to that character or via that character were showing that you had absolutely no empathy for a family like that. Can I ask you a quick question, Yes, right? yes, please, please. Right. See, nobody is asking. I think if they ask Rani to marry him as he is, or Huh, some kind of relationship, sexual, right? huh, huh, An intimate relationship of marriage or huh, whatever, huh, right? Then it will go wrong. I mean, from the OST, I can see that he recovers from huh, his huh, huh, and he's trying to talk to Rani and she's ignoring him. huh. वो एक और बात है. वो, हाँ, वही ना. तो ये तो अब भाई हमें तो नहीं पता कहानी आगे कहाँ जाएगी, तो उसकी बेसिस पे ही हम डिसाइड कर. जब हमें कहानी समझ में नहीं आ रही थी तो हमने बता दिया. अब समझ में आ रही है तो हम एंजॉय कर रहे हैं और हम बता रहे हैं. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू बहरूपिया, बिकॉज बहरूपिया हाँ इज वन ऑफ द ड्रामाज. अच्छा एक सर, मैं कुछ क्लास. नहीं बोलूंगी, आप बताएं, क्योंकि मैं डिसअपॉइंट करने वाली हूँ दो चार बातों पे. तो आप बताइए अच्छा. बहरूपिया. हाँ, आपका क्या टेक रहा बहरूपिया? You see, I really enjoy Behroopia. It's my go-to, like intelligent गो viewing. टू इंटेलिजेंट शो, यस, 100%. It अग्रीड. definitely is, and I love the way कि इन्होंने they I have a feeling in one of the scenes. I don't know if it was last week or this week, but they are hinting at child abuse. हम्म. हम्म. And because the way the man pulls the razai of हम्म. the child, I mean, it can be taken एज, in two हाँ, ways. इम्प्लाइड. ओके. Yeah, ओके. it could be implied, and I can be. I correct me if I'm wrong, but I got the feeling that that scene was there for a reason. कि पॉसिबल. वो रज़ाई उतारता है उसकी, and जो इतनी उससे नफरत है, हम्म. and there was an implication. Maybe they can't show it. Maybe they don't want to go that far, हम्म. but it wasn't just to wake him up. So हम्म. it may be there. So I understand why he's in pain, हाँ. and so you notice he does not touch his wife. या. And slowly but surely, you see he is turning his wife into a victim हम्म. and he is becoming Qasim. थोड़ी देर में he will become Qasim. Even though he is accusing her, तुम बिल्कुल कासिम की तरह निकलोगी, मुझे हम्म. पागल होगी, etc. या. But and maybe this is what you're going to say as well, but what I didn't understand was why Madiha Imam couldn't tell her parents. That made no sense to me. Ah, okay. Now, three things for me that were problematic, and then I'll go on to what is so brilliant about Behroopia. The first thing is, okay, so I'll go into what is brilliant, then I'll come to the problem. I think what's brilliant is that if you notice, and this is Hmm. again props to the director. So when you see the flashback scenes of Qasim's एनी जैदी का जो कैरेक्टर, जो खाला है, तो कासिम जो उनके वालिद हैं, तौसीक हैदर का जो कैरेक्टर है, जो एनी जैदी के कैरेक्टर होते हैं, if you notice, and I mean, if the director did this mindfully, because
Qasim, like the father, and Mikhail are wearing similar clothes, and Annie Zaidi's character and Madiha Imam are wearing similar clothes, similar hairstyles, similar makeup, similar headbands, even. So there is this I did immediate. not pick up on that. I Please, didn't please go pick up. to that, go back and check that out because she's wearing this headband. And because I Achha. found Madiha Imam's dressing kind of curious. I'm like, Yeah. nobody dresses like this in, like, Like she had that kind of like, हाँ headband और it वो looked pretty. it looked Yeah. she looked nice. I mean, she's all dressed up, but I'm like, that's very curious. If she is being made to kind of mirror the mother figure in this boy's life and Hmm. his anger because he has such abandonment issues. All his anger is being channeled. He looks Hmm. at her and it just enrages him and it just breaks apart his personality all over again. So that's brilliant, number one. Again, the brilliance of Madiha Imam and the way that she's just completely gaslighted. This is her reality, and as audiences, we see this is how what she's going through, right? And then you have her constantly being told, "पहले तो माँ बोल रही है." And guys, we're like kind of like wrapping like 4 episodes, I think, by this time because हमारा ये वाला session थोड़ा सा आगे चला गया. तो आपने शुरू में देखा कि पहले वो माँ बोल रही होती है फिर उसकी बहन काइंड ऑफ उसको बोल रही होती है कि नहीं नहीं वो तो हो जाता है ना कभी कभी बंदा ऐसे हो जाता है क्या हो गया एंड देन दैट गाय ऑल्सो लाइक फैसल कुरैशी's कैरेक्टर ऑल्सो इज लाइक बट मुझे नहीं अच्छा लगता ना कि ये चीजें तुम समझ जाया करो ना मतलब सो व्हाट्स द बिग डील This is the kind of gaslighting women who are abused. फिर Exactly. कुछ Exactly. नहीं हुआ When क्या you're हुआ है living with a नहीं mentally ill हुआ person, this yeah is when and a yeah woman and because you see this relationship is already so intimate, you can't pick up these things. Same thing I used to say in Jaffa also. Little Hmm. microaggressions which are so difficult to spot in intimate relationships. It's just that women, when they're going through it, because they're gaslighted by the person they're spending so much time with, they question their reality, and and that's the people around yes. हमारी सोसाइटी जो है हाँ बिल्कुल 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 वो तो कहती है कि अच्छा क्या हो गया कुछ नहीं होता ये तो होता रहता है मतलब शादियों में इतना एक बहुत कुछ बार होता हुआ है एक बार है हुआ अगली हाँ कभी नहीं हो हाँ जो दस्तक में बस भी हुआ एक हाँ बार इसको माफ हाँ कर दो हाँ 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 आइंदा नहीं नहीं हम समझाएंगे चलो ठीक है कोई नहीं अच्छा वो गुस्से में कह दिया होगा गुस्से के गुस्से में दिल के बड़े अच्छे हैं तो एक तो ये ये मुझे ना इस अल्फाज से आप प्लीज मुझे एंड दिस इज समथिंग द मिनट समवन सेज नहीं गुस्से के जरा तेज हैं वैसे दिल के बहुत बहुत अच्छे हैं अच्छे हैं हम दे क्या डो करें ऐसे दिल का ऐसे काले राइट दिल का कहाँ से निकाल के लाएं उस दिल को ताकि हमें नजर आए राइट जुबान की तेज है दिल हाँ की बहुत अच्छी है I know you will talk तो about that when you will talk about Sher. So just and then what again is brilliant is Madiha Imam's response to that. She's brilliant. She's absolutely breathtaking as this person who's like, why isn't anyone listening to me or believing me and where do I go? Then Faisal Qureshi himself, like when he changes and the rage and the self-doubt and everything that he's bringing in this role is magnificent. Yeah, so Faisal Qureshi is just taking it out of the park, like knocking it out of the park like nobody's business. He's brilliant. But now here's my criticism for it. The fact that he is physically violent with her is where I stop feeling sorry for the character. हम्म I'm like, yeah, I'm done. I don't want to see this guy get better. I don't care if he gets better. I don't care if he gets closure. that's his business That's his business. You have now hurt an innocent person. It reminded me, this is not a criticism, by the way. This is just how I reacted to the story. My immediate go-to moment because it was such a flashpoint recently was Noor Muqaddam because हम्म again Zahir Jafar was a deeply disturbed individual, right? When women who are such extraordinary women, they're strong, they're confident, and they're like the life of the party, and they're wonderful, and you don't expect such women to be stuck in abusive relationships, but they are and when and in the tightness of that space between you and your significant other where you're being abused or hit or any kind of violence is being projected towards you, I think that is the loneliest thing a woman can experience. And to see Madiha Imam's character go through that was so painful. It just stopped being entertaining. It just started feeling painful. So that is how I felt. um I don't know where Rida Bilal is taking the story. Maybe this should not have happened. Maybe I'm not saying कि ऐसा नहीं होता.
तो ये क्यों दिखाया उन्होंने, नहीं बिल्कुल होता है ऐसा, और सही दिखाया है इन वे। एक मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी अगले को अटैक कर सकता है, लेकिन अगर आप एंड में यहाँ लेके जाएंगी ना कहानी को कि आई एम नाउ गोइंग टू फील सॉरी फॉर हिम, आई एम नॉट, ही इज That's डेड। not the Bilal style from So what let's I've seen. hope, yeah, so let's hope that doesn't Meaning, happen. and also you see that the other guy, uska naam Saim hai, No. right, has come back. In fact, I think I have to appreciate Rida Bilal's writing in this. Mm-hmm. What from one angle, she's showing that this guy is so great on paper. He's Ah. industrious. By the way, and this is my criticism, in लोगों के पास मॉल है, सोने के लिए कमरे नहीं है, right? Where do they live? Ah. Right? Anyway, putting that aside, Ah. uh, everybody sharing bedrooms. Ah. So, putting all of that aside, I'm going to say, okay, I think Rida Balal has written a very, very brilliant story. Mm. Uh, so well structured. Mm. Here is a broken woman. She's sitting there like a portrait, and he says, मुझे तुम्हारी वो तस्वीर, that picture of you, I bought that image. Now Mm. he wants to, वो ना उसकी इमेज को वो चाहता है कि मैं अपने घर में वो जो बेसमेंट लेवल है उसकी उसमें सजा दूं. He doesn't Mm. think of her It's a as a real possession. being. And I mean, absolutely magnificent acting from Faisal Qureshi. That one expression when he decides to trip her up, he's Yeah. very angry कि तुम कौन होती हो वापस काम पे जाने वाली. Yeah. And by the way, this is like you can see that is in Zamir of Hijr. That is in a lot Mm. of men Yeah, that we we see. see. Yeah, 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 yeah. Faisal Qureshi's character is a disturbed man, so he's willing to go to the nth degree. और Mm. आप उनके अंदर in this tribute to his acting, you can 100%. जब उसके ऊपर शैतान हावी होता है, you can see that sudden change in feature. वो थोड़ा सा एक micro expression, and the camera captures it, Yeah. and he decides कि ये trip, right? हाँ. Then afterwards he immediately मुझे क्या पता हुआ है, हाय अल्लाह, हाँ. so much concern. And there is, and the brilliance of this is he didn't switch personalities. That was Mikal. Yeah, That he was, that's what made me go like, oh yeah, man, now that's I him. can't. That is Yeah, now I pure can't. Mikal. That wasn't his disease. That was gussa ke how dare you not do what I want, what I say. So, and Yeah. he brought himself a pet. तो कि Yeah. भाई जब तक तुम Yeah, I'll पीते हो, control you. yeah. Yeah, yeah. And what is, and I understand her as well because नई नई शादी हुई है, and no woman of a good family wants to say कि भाई यार ये तो मैं पागल के साथ शादी हो गई है, I don't want to stay with him. Mm. It's her decision. Obviously her parents didn't want it, now she's standing up. So I think brilliant writing, great direction and acting, and you get a product like this. And I feel like this is one of those classic thrillers, but as usual, the styling and the wardrobe, if only somebody had actually taken care of it, and we wouldn't have to see Annie Jaffrey in those horrible Any horrible Zeddy. Annie Zadi, I apologize, Yeah, any those Jaffrey is horrible Balu clothes. Mahi. Yeah, I mean, I can't, maybe that's why, because we were Yeah. interviewing Bobby a minute ago. So Yeah. those terrible clothes, I mean, on हाँ. Sarah, they all look good, but on Annie Zadi, it's ridiculous कि भाई हर वक्त उन्होंने जूड़ा कस कस के किया होता है. It gives you a headache, man. And this kind of juda and those kind of clothes, right? Uh, हाँ. Message to our actors and actresses, अमीर लोग कॉटन भी पहन लेते हैं, right? सैटिन नहीं पहने होते, शिमो शिमो सिल्क वगैरह. Yeah, I mean, it was ridiculous. अच्छा, You वो can वही look. लास्ट लास्ट क्रिटिसिज्म तो मेरा यही है कि मुझे नहीं पता कि व्हाई इजंट शी टेलिंग हर पेरेंट्स, जो रीजन उन्होंने दिए मुझे तो नहीं कोई वो बहुत. I can see. I don't think it's justified. Obviously, story भी तो आगे चलानी है. But I हम्म. can see if I have to justify it, I can see she has just her parents were begging her not to marry this man, हम्म. and she let herself be fooled. Also, पॉसिबल. the element of she's a very capable woman, हम्म. and I think she wants to see what's going on. वो थोड़ी सी curiosity है, but what I don't understand is you're allowing yourself to be put in harm's way. Because, Yeah. अच्छा, can we have a quick talk about the other character, Syme? Yeah, yeah. Because he's so fascinating to me because he's, Really? yeah, he is, Why? because he is every man. हाँ.
true, He in is a the way. real Pakistani man. He's a real middle class poster boy. Yeah, 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 he's a real middle class jug of poison yeah. that Yeah. and yeah, he is. He's a jug of poison. क्योंकि like ये जो मिकाल है ना, कम से कम वो तो सामने है. ये हाँ, छोटा जग जहर का रेड वो भी फ्लैग. कहाँ सामने है, ये सब जहर जहर अंदर लेके बैठे हैं Yeah. डसने But के I लिए। mean, like, okay, you know that Mikhail is not mentally stable. He's ओके। borderline personality, etc. वाज़ेह है. ये जो Saim Saab is supposed to be the good guy, हाँ, right? And he isn't. Because, I mean, the way Rida Balal built up the way that Saim changed his mind, मैंने अपनी बहन पे focus करना है, मैंने ये, and all that little echo chamber, sorry, and ecosystem he built up people. हाँ, बड़ी नखरीली है भाई, इस टाइप की औरत से क्यों शादी तुम करोगे? And then he had to go to Australia to understand his own feelings. हाँ, So for modern men, I think for a lot of men that is true. Wouldn't हाँ, they value women because those women are nice to them? They want हाँ, that, like, I didn't have to वैलिडेशन। do her. Yeah. So oh, खुशामते नहीं करी and all of this, and then later on he realizes, yeah, she was the best. But I'm thinking, is he really that much of a green flag? I'm always the one who wants third choice. I You don't know, think he's a green flag at all. Who's calling him a yeah. green flag? Nee, because I have a feeling he's going to be her rescue party, na? So that I got it. hope not. I Mm. really don't want that to happen. I'd be so No, disappointed if that happened. let's see. Let's Let's see see. what happens. But Last you but know, not the it's least, a good sorry, show. it's a This good is a show. This is a good good show. This is 100% good show. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सदफ, मैं तो देख नहीं रही, तो आप ही मुझे बताएंगी कि क्या हो रहा है शेर में और मन मस्त मलंग में, और क्यों हो रहा है ये जो भी हो रहा है, क्या अच्छा, है कम ये। ऑन, ये टीजर्स तो आपने शेयर के देखे हाँ, होंगे. देखें नाम तो सुना होगा. ना। अनफॉर्चुनेटली मैंने नाम भी सुना है, टीजर भी देखा है, गाने भी देखे हैं, इंटरव्यूज भी देखे हैं। दानिश तैमूर साहब बाय द वे कहते हैं कि जी वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते, तो सारा खान को उन्होंने आगे कर दिया और उन्होंने इतनी वायरल मोमेंट सबको दे दी, तो अब ना चाहते हुए भी हमें पता है कि सारा खान की ओपिनियन क्या है अबाउट फेमिनिज्म। हाँ जी, जो मैंने देखा है तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मुझे तो नहीं पता वाई। मैंने थोड़ा सा एक्चुअली ड्रामा भी देखा है, आई वोंट लाई, बट मैं मेरी बस हो गई फिर, चौथी एपिसोड मैंने नहीं देखी, चौथी या पांचवी जो भी आई है रिसेंट वाली मैंने नहीं देखी, मैं कहा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, सॉरी। मेरे Okay. से मेरे से तो आप बताइए, व्हाट वाज योर टेक। See, I mean, I think that, look, it is, I feel underneath that shouting and हाँ, macho male behavior, there's a हाँ, story which actually makes a little bit of sense. ओके, क्योंकि Sanjabil, it's not Nooran, हाँ, right? ओ गॉड, Sanjabil. हाँ, So Sanjabil ने, for whatever her faults when she writes commercial projects, उनकी story strong होती है, right? ओके, We may not agree with it, we may not like it, but वो होती है, and this is, you can see that he is not fallen directly in love with the victim. वो जो हम्म, लड़की की उसने जान बचाई, he finds her attractive. थोड़ा बहुत उन्होंने वो ईस्टर एग छोड़े हैं कि भाई he is looking at her and empathizing with her, right? हाँ, But he is actually interested in वो सात पर्दों वाली लड़की जो वो जो सैयदों की बेटी है. I हाँ, mean, he is interested in her, and they show him he may be angry at his father, हम्म, but I mean, that scene between him and his father, I think there was work done. It हम्म, wasn't just the usual वो जो एक होता है ना macho man dialogues, etc. His हम्म, father says, मुझे पता है चीट कर रहे हैं मेरे रिश्तेदार, etc., हम्म, etc. हम्म, So this is how we keep families together. And हम्म, that seemed kind of real. And then, you see in the next scene, you see the father, उनके पाँव पड़ जाता है कि नहीं, हमें मेरे बेटे की खुशियां चाहिए. And then you also see on the other side that the girl is so guilty, and she's saying, I'll do anything to get back your good opinion to her father. So they're ओके, building up this thing, which I think for writers, you have to give them points. They are building up a scenario in which, rather than become free, these two are even more bound to their family cultures, right? ओके, When the clash comes, you'll have to understand why. So i'm ओके, i'm actually getting more and more pulled into it. But I want to know why it's so popular, right? As a, like, from a, anthropology is the study of human cultures. yeah,
and look, let's chuck a bit of evolutionary biology in there as well, and ask why is it that unless that male lead shouts at people or हाँ. एकदम किसी की माँ का लाड नहीं है, why are those things so attractive to women? Because it's like you said, it's evolutionary, babe. It's like it's all about those carnal kind of needs. And I always used to like there's meme going around also that Danish Taimur with Heba Bukhari, he's pulling her and he's walking ahead and she's like trailing behind him. Then he's doing the same thing with that Seher ladki in Man Mast Malang. Then he's doing this with Sara Khan now, and he's done this previously with some other actors also. Okay, Yeah, I he's follow. going ahead and she's like the girl is बेचारी slow motion में उनके पीछे हाथ चलते हुए जा रही हैं. I think that somehow the Asian or like the Pakistani woman, um, some Pakistani women, not all Pakistani women, have this fantasy that we'll find a protector who will save us from the oppression of the world and from the cruelties of the world, and he will be the one. And I think that that is like the ultimate romance. कि वो होगा हमारा knight in shining armor. Do I subscribe to it? No. For me, I was actually recently watching Ankahi, and there's Hmm. a scene where Shehnaz Sheikh's character has taken Javed Sheikh to the restaurant, and she's there, and he's unable to pay, and she knows it, and she knows that he's just kind of flirting with her. But then she orders everything on the menu, like almost literally everything she Hmm. could on the menu. And Javed Sheikh goes and he kind of puts his watch as a bargain. And then she realizes this, and then she goes in and gets the watch and gives it back to him. She says, I think you left your watch at the counter. So here's your watch. So then there's a scene between her and Shakil Saab where Shakil Saab is like raging that you haven't put anything in place and this and the comedy that spurned out of it was Hmm. one for the ages, one that was copied by Bollywood, one that is still was recently copied in Neem Se Mohabbat, this Hmm. flighty secretary sort of a person and the curmudgeon of a boss kind of a person. So I think that for me, if romance is even stemming out of something where there is a deeper need of me, as a woman, that मेरी कोई deeper need है जो मुझे लगे कि यार should be satisfied, or it should be like I feel like I'm being held. Like I love so many K dramas which are like that. But at the same time, इतना औरत के जात को इतना स्टूपिड बना देना और Hmm. उसको ऐसा बना देना कि जैसे उसकी कोई एजेंसी नहीं है, जब वो चीख रहा होता है उस पे तो वो जवाब दे रही होती है उसको, मतलब वो चुप करके मुझ पे चीख रही है, हाँ मैं क्या करूं. शी इज नॉट लाइक दैट एट ऑल. शी लाइक आपने मेरा इतना ऐसे कर दिया था इसलिए मैं ऐसी हो गई, वरना तो मैं ऐसी बिल्कुल नहीं. शी इज कॉन्स्टेंटली लाइक क्लैपिंग बैक टू हिम. So Hmm. this hapless kind of romance, one-sided thing is very, I don't know, not my thing. But it isn't one-sided. That girl, particularly in Man Mast Malang, if we want to digress, Yeah. वो भी तो उसे पसंद करती है बस ऊपर ऊपर से. एंड दिस इज व्हाई आई फाइंड इट डेंजरस के वो गाने हैं ना इंडिया के कब तक रोएगी चीखेगी चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन नहीं, हसीना मान जाएगी. होंठों पे गालियां दिल में लड्डू फूट रहे हैं, दैट काइंड ऑफ हाँ हाँ थिंग. हाँ हाँ. Right? And that's scary to me because it's not 99%, it's not true. uh, हाँ. I don't like this kind of like अब वो handcuffs उसे लगा रहा है, वो उसे ये कर रहा है, वो कर रहा है, these kind of forced cheapo tactics to get ratings, right? And the number one, right, let me separate two issues. This kind of inappropriate intimacy, forced intimacy, uh, हाँ. I think it gives a chaska or a flavor to a lot of people. But, a lot of intimacy, a lot of modern kind of Western interpretations of love are very much available on the internet anywhere. Any हाँ. screen you look at, you can find these things. हाँ. Whereas, people come to Pakistani dramas for family viewing. They come for Yeah. the values that we, Wholesomeness. For the yeah. wholesomeness, yes. Yeah, and Yes. we are like Pakistani dramas are known के everybody can watch them. दादी Yeah, देख with सकती हाँ है, हम सब मिल के देख नानी सकते आप, हैं. हाँ. yeah, बच्चे देख रहे हैं. You're not afraid of putting a Pakistani drama on in You're front of so your right. children. And I feel like it's a betrayal of the genre Yeah. because you are suddenly inserting things which are not part of the genre and which make no sense and do not like improve the story, do Yeah. not increase the view. It's just increasing the viewership with cheap tactics. Yeah. And
pulling down the entire genre. Hmm. If you want to do that, you can put a different rating on it and put that drama on late night or something. Yeah. But introducing these kind of like very physical motifs into a show, which is basically it's got huge ratings. I think it's very irresponsible, and I think that actors in particular can say no. Danish is not a bacha. He's got a family and he should think very carefully. As to the young lady, I don't know what she's thinking. That's it. So that's your take on Mann Mast Malang. Mann Mast Malang. What's But what coming back to Sher? What's what's the problem with Sher? Because the reason why here I the don't like it problem is, is it's a good script and they're ruining it with this masala. That's me. I mean, they could we what was that Sabat drama? I thought, उल्फत की नई मंजिल को सलाम, क्या आपकी नंद आपका ना सेज सजा देगी, आग लगा देती है ना वो सारा हाँ खान का हाँ 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 Maura ka, और Maura बेचारी उसका character is sitting there. She's not allowed to fight or get angry or leave or anything. वो हम्म, बेचारी चुप करके तो हंस रही है एंड द ब्रदर इज कवरिंग फॉर हिज सिस्टर. भाई हाँ आप ही बना दिए आप लोगों के वो हाँ बेटू, राइट, बट हाँ आप चुप रहें बिकॉज यूर हाँ सावित्री औरत. एंड द सेम विद दिस, गोली मार दी है नंद ने आपको पेट में. तो हाँ nobody is questioning Taj Bibi. And I'm हाँ going like Ulfat ki nayi manzil ko salam, right? Is हाँ this a new thing now people have to put up with? किसी ने उस औरत पे शाउट नहीं किया, उसको मना नहीं किया. भाई कह रहे हैं अच्छा जैसे कोई हादसा हो गया है. हाँ Literally. And हाँ it's unbelievable. And this whole drama has all these elements, and I call these kind of things like meh. This is a dopamine hit drama. You'll find, shouting, and very, insane very, people doing insane things. Yeah. and your lizard brain is suddenly activated, right? वो जो छोटी spine पे brain है ना, कि oh, primitive things look good. ये लड़का जो है ना, he's dragging people, but it could have been good. That it is possible to have that kind of machoism and alpha male, but also have good writing. We've seen it in Raja Rani, right? Mm, It mm, has a lot of stuff going on, yet there mm. are moments in there where there's some good writing, like the interaction between the Actually, parents. you've actually hit a very important point here, and we'll conclude our session based on this. Ke it is possible to show a good man without showing him to be either a wimp of a man or a simp of a man who's like, oh, I'm the ultimate feminist, and oh my God, वो जो एक caricature अब बन गया है आजकल की दुनिया में एक मर्द का, या वो वेस्टर्न अल्फा में जो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा मेल वेस्टर्न सोसाइटीज में एग्जिस्ट करता है, इवन पाकिस्तानी जैसी सोसाइटीज में एग्जिस्ट करता है, कि जिसमें एक मर्द वो जो मौला जट वाला जो Hmm. आर्किटाइप आई वुड से, तो आई थिंक उन दोनों के बीच में कहीं नॉर्मल ह्यूमन मेल्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो नॉर्मल ह्यूमन मेल्स होते हैं वो दे स्टैंड अप एंड डू द राइट थिंग एंड दे अंडरस्टैंड दैट डूइंग द राइट थिंग इज द वे टू गो. एंड आई थिंक कि पिछले कुछ ने जो हमारे जो ड्रामे गुजरे हैं या जो हमने कुछ में देखा है उसमें कहीं अगर आप कहें कि हाँ यार दिस इज अ मैन who has made mistakes but he's also a good man is maybe Mustafa from Kabhi Main Kabhi Tum. He comes closest to what I would say is a good man doing. And again, why it's important to relate that example is it's because it is the biggest hit of television in the past quite a long while, quite a long while. Let's go back many years and look at how what a gargantuan hit Kabhi Main Kabhi Tum was. So Hmm. you can have a successful story without resorting to toxic masculinity. Hmm. एंड मुस्तफाज कैरेक्टर शोज के दानिश तैमूर से लड़कियों को मोहब्बत हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग, बट इट्स Hmm. मुस्तफा दे वुड probably want to go home with. So Hmm. Danish Tamur ka jo, and the reason why I think Sher is such a huge hit, or even Man Mast Malang is like rating after rating after rating, is I think because of Danish Tamur's toxic fan base, which just does not allow anyone to um, question that fan base. And एक और चीज जो And मुझे, पाल कौन रहा है? वो खुद ही पाल रहे हैं ना, और चैनल्स पाल रहे हैं, चैनल्स उससे कैपिटलाइज कर रहे हैं. तो मुझे Hmm. लगता है कि एक इंतहाई नेकेड कैपिटलिज्म के फेस से हम गुजर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों के. मुझे लगता है इस पूरे रेस में बिग बैंग कुछ हद तक अपना एक अच्छा रोल प्ले करता है, कि वो एटलीस्ट परवरिश जैसे ड्रामों पे करता है, जिससे हम टीवी ने फिर क्यों लिया, और हम टीवी अब एक आईना आसिफ और अदनान रज़ा मीर का कोई शो लेकर आ रहे हैं. और इसी तरह
हम टीवी कहीं ना कहीं, अगर आप हिजर और दस्तखत देखें तो इनमें हम्म, कहीं ना कहीं वो नुआंसेस मौजूद है। इवन मेरी तन्हाई विद ऑल इट्स प्रॉब्लम्स में वो अच्छी चीजें। अच्छा, ARY में दस्तक जैसा ड्रामा भी मौजूद है, और दस्तक जैसे ड्रामे आपको दिखाते हैं कि देखो यार, लेकिन वो मुझे लगता है मुइज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबली गुड। द मुइज जैसे मर्द नहीं होते, मुझे लगता है मेजोरिटी yeah, होते I, हैं। I think Muiz की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज Ali Raza is so good looking, इज अ and गुड लुकिंग and पर्सन। he is just like, it's like with Angelina Jolie, you forget she's a good actress. So या he's fine, but इतने looks हैं कि you're like नहीं, कभी नहीं हो ये सकता। पॉसिबल ही नहीं है, ये इतने भी लुक्स के साथ शक्ति ये भी है, अच्छी, ये भी ये अच्छी। भी है, वो भी है, नहीं हाँ, वैसे वो बड़ा अच्छा होता अगर वो एक बहुत ही नॉर्मल लुकिंग या लेस देन गुड लुकिंग वाला, जो हर हमारा कोई है ही नहीं बेचारा बच्चा, ऐसा सारे ही बच्चे तुम्हारे इतने प्यारे। और अच्छा, एक और जो सदफ हम ड्रामा जिसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन शायद इवेंचुअली हमें हमें हम करें, या आई डोंट Oh, नो। I have one more thing to say about या Sher. गो हेड, गो हेड। Yeah. And this is the idea that एक हीरो आएगा हाँ और वो सब कुछ ठीक करेगा, because this was a big idea in 90s Bollywood, no, 2000s Bollywood, right? हाँ एक बंदा आएगा, and I think Amitabh Bachchan started it and then it went on. They हाँ। and साउथ में भी इस टाइप की बहुत मूवीज होती हैं। एक होता है एंड वो सब कुछ ठीक कर देगा। Everybody else is an idiot, या right? And I've noticed that when the public is feeling a little frustrated with लाइफ। institutions, life, bills pay karne hai, and you feel like you are drowning. This may be, I may be stretching things because I like to analyze things, right? This is why we're critics, because we या right? But I think when the public is kind of like feeling frustrated and Joe average man, they're feeling a little unempowered, powerless, whatever you like, तो फिर इस टाइप के कैरेक्टर्स बड़े पसंद आते हैं, हम्म। because and they rise because it's one man and he's gonna kick या some या right and he's या gonna fix it. Whereas and it's a kind of this kind of thinking is linked to materialism as well. Have you noticed the shift we are getting with our writers now? एक हम्म। वक्त था कि हमारा हमेशा एंटी मटेरियलिस्टिक मैसेज होता था। नाउ वी आर बीइंग टोल्ड मनी गुड, इट जस्ट हाँ नीड द राइट मैन, फ्यूडल गुड, इट जस्ट या नीड्स द राइट guy. That's all. Feudals are not bad. It's the system is not bad. Must make sure कि king अच्छा वाला हो. How do you, हाँ right? या Whereas in a democracy or in a anti-materialistic message, they will say, you can empower yourself to fix things. It's up to you. I don't know, maybe I'm going a little No, deep sir, there. if you actually have made a brilliant point here that the kind of glorification of materialism and the kind of glorification of feudal culture, which I also, I think it पहले से भी था, मैं तेरे बिन को इतना फॉल्ट नहीं करी, बट तेरे बिन जितना सक्सेसफुल हुआ तो But आपने, Tere was not a recipe for success. They showed बट the देव यूज्ड flaws. इट, So बट yeah, देव यूज्ड both इट of ना, them. Yeah. देव यूज दैट। और मुझे लगता है कि ऐसे टॉक्सिक जो टीवी ड्रामा जो जियो प्रोड्यूस करता है, कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई ये पॉइंट जरूर दिखाना चाहिए। मतलब आपने नोट किया कि इवन तेरे बिन में या इवन वैसे भी ड्रामा ऐसा जब कोई आता है तो हम दूसरे कैरेक्टर्स का डाउनफॉल दिखा देते हैं, लेकिन जो अमीर आदमी होता है, जो कि पहले के ड्रामों में बहुत होता था बाय द वे, कि अमीर आदमी की फिर वो एक डाउनफॉल आता है, वो एक्सपोज होता है, वो सड़क पे आ जाता है। वो नहीं होता। औरत पागल हो जाएगी लेकिन अमीर आदमी गरीब नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को, क्योंकि वो अपना माल मसाला बेचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को बेच ही रहे हैं चीजें। तो और बोलेंगे कि अगर हम बेचना बंद कर देंगे तो हमारा चैनल कैसे चलेगा। लेकिन, और मैं ये नहीं कह रही कि चीजें बेचना गलत है या एक अच्छी लाइफ वो करना गलत है, मगर कहीं ना कहीं हम ये चीज भूल गए जो आपने पॉइंट आउट की है वेरी राइटली एंड वेरी ट्रूली, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद इट, इज के इट्स नॉट अबाउट दैट एक्सट्रीम के या तो हमारे पास फ्यूडल होने चाहिए या हम वो गरीब जो है कलंदर बन जाए। नहीं भाई, कि क्या एक मेरिटोरियस सोसाइटी, मेरिटोक्रेसी में, या एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे Merit ह्यूमन based. राइट्स हो, हाँ, मेरिट बेस्ड हो या ह्यूमन राइट्स हो, तो क्या वहां पे सब अप्रेस्ड होते हैं? नहीं, वो सोसाइटीज बेहतर चलती हैं। और फ्यूडलिज्म जो पाकिस्तान का एक इतना बड़ा प्लेग है पाकिस्तान के अंदर इस फ्यूडल कल्चर का, बिकॉज हमारी जो एलीट क्लास है वो हमारी फ्यूडल क्लास से उठ के आई है। जो हमारी करप्शन से में डूबी हुई क्लास है, चाहे वो हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे वो हमारे कपड़े बनाने वाले हो, चाहे हमारे चैनल में कोई बैठा हो,
पॉलिटिशियंस में कोई बैठा हो, ये एलिटियों की जो अंदर से जो जड़ है वो फ्यूडलिज्म है। ये हम्म। पैसा उन्होंने इसलिए इस तरह नहीं बनाया है कि उन्होंने कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दी, वो लोग भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जो फ्यूडल क्लास है जिनकी एक्चुअल जो सक्सेस है वो यहीं से एंड निकली दोज आर द वन दैट हम लोग ये जितने भी ड्रामेज आप देखेंगे दे ऑल फ्यूडल्स, दे है। ऑल फ्यूडल या लैंड ओनिंग। बाकी सब गलत होते हैं, एक अच्छा होता है। एंड उस एक अच्छा वो एक शूरवीर पैदा होता है। एंड देन ही शूरवीर इज द क्या होता है? वन, ये शूरवीर, अपेरेंटली ही इज दैट वन इन अ मिलियन, यू अच्छा नो। अच्छा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, ये वो Yeah, वाला सीन। they, yeah, I हाँ। mean, it's like, look at his name, Sher Zaman, right? शेर। So, Sher Zaman means the lion of the time. या। So, he's roaring at everybody, and instead of fixing things, एक वो ना एक आध लातें इधर उधर मारेगा, एक आध पता नहीं क्या करेगा, एंड हाँ एवरीथिंग fixed. I think there is one teaser in which they show कि उसको ना मेंटल ब्रेकडाउन उसका होता है। हाँ। एंड फाइनली साइकोलॉजी की डिग्री जो हमारी हेरोइन है किस वो किस दिन काम के लिए, इस दिन के लिए थी वो? जिस दिन के लिए थी वो। एंड आई थिंक कम क्लोज एंड देन you'll have that thing about what they owe their families. So ओह he, माय he गॉड। he becomes close to his father, she becomes close to her father, despite all their toxic behaviors, right? हाउ नाइस। And this is what is getting annoying to me, क्योंकि पहले वक्तों में ऐसा हीरो या हीरोइन नहीं होता था। The point हाँ is कि you guys are wrong, आप गलत कर रहे हैं ये सब। हाँ हाँ हाँ, ओके, वेल दैट साउंड्स problematic to say the least. हम्म। आई वुड वॉन्ट यू गाइस टू वेन, क्योंकि जो पागल फैंस है शेर के वो तो प्लीज ना ही बोलें कुछ, बहुत शुक्रिया आपका, आप छोड़ दें, रहने दें, ना देखें रिव्यूज हमारे, आई थिंक हम आपके लिए बने ही नहीं, हमारा आपका रिश्ता यही तक का था। लेकिन जो लोग वाकई थोड़ा इंटेलिजेंट डिसर्निंग हमारी ऑडियंस है, जो कि मुझे पता है हमारे कमेंट सेक्शन में वो लोग बहुत मतलब बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं हमारे रिव्यूज के साथ साथ हमें कमेंट कर रहे होते हैं, तो आई वांट देम टू वे इन ऑन why this, or do you feel that the feudalism is kind of being whitewashed in dramas like Mast Malang and Sher? So let us know in the comment section. अपना बहुत ख्याल रखिएगा सदा, थैंक यू सो मच। उससे पहले कि मैं अपने ऑडियंसेस को थैंक यू करूँ, आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा आप हमें इतनी वैल्यूबल इनसाइट्स देती हैं, सदफ के साथ बैठ के बहुत कुछ चीजें सीखने को भी मिलती हैं और सिखाने को भी मिलती हैं, सो थैंक यू सो मच सदफ, एज ऑलवेज हर I वीक आप learned टाइम from निकालती you. हैं। यस, थैंक I यू। learned a lot from you. Mm. एंड दैट्स जस्ट यू बीइंग हम्बल। तो गाइज जो भी आप लोग देख रहे हैं प्लीज अपना कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा रिस्पेक्टफुली। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान मत पहुंचाएगा, मैं इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, ईद के बाद मिलेंगे, ईद के दौरान मिलेंगे, देख लेंगे क्या होता है, Let's बट see. विल सी। बट एडवांस ईद मुबारक, और इंशाल्लाह ईद के दौरान या आसपास कहीं उसमें फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक आई सेड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो सदफ ऑन ऑल हर सोशल्स। खुदा Eid हाफिज। Mubarak from me too in इन advance. एडवांस। खुदा हाफिज।